Good morning, students. In today's class, we will be discussing about the reproduction in Paramecium. Paramecium reproduces asexually by transverse binary fission. The transverse binary fission is the most preferred type of reproduction, but along with transverse binary fission, paramecium also undergoes several other type of reproduction also. The binary fission is said to be the asexual mean of reproducing, while it can reproduce by sexual reproduction also. There are several types of nuclear reorganization when paramecium reproduces sexually. These nuclear reorganization are conjugation, endomixis, autogamy, cytogamy, and hemimixis. We will discuss these one by one. Transverse binary fission is the commonest type of asexual reproduction in Paramecium. It is a unique asexual process in which one fully grown organism divides into two daughter individuals without leaving a parental corpse. That is, one paramecium, it divides into two daughter paramecia, leaving no trace of parental body. The plane of division is through the center of the cell and in a plane at right angle to the long axis of the body. Division of the cell body as a whole is always followed by the division of nuclei. That is, before the organism divides into two, the nucleus divides before the complete separation of the two daughter paramecia occurs. It appears that the reproduction is initiated by nuclear activity and division. So, we can say that the first step for asexual reproduction occurs when the nuclei divides into two daughter nuclei. It divides into two, and then further the division of the body occurs, as is seen in this diagram also. The nuclei dividing mitotically, new oral groove forming, separation of the two daughter paramecia. So, the paramecium reproduced by a binary fission which is transverse during favorable conditions. In binary fission, the micronucleus divides by mitosis into two daughter micronuclei which move to opposite end of the cell
The micronucleus elongates and divides transversely by amitosis. In micronuclei or nucleus, as I had mentioned before, the division is mitosis, but in macronucleus, the division is amitotic. So, the macronucleus elongates and divides transversely by amitosis. Another cytopharynx is formed and the two new contractile vacuole appears, one near the anterior end and another near the posterior end. In the meantime, a constriction furrow appears near the middle of the body. It deepens until the cytoplasm is completely divided. The two daughter paramecia are of equal size, each containing a set of cell organelle. The process of binary fission requires about 2 hours to complete and may occur 1 to 4 times per day. The two daughter paramecia which is formed, one from the anterior part of the paramecium, the anterior one is called the proter and the posterior paramecia is called the opisthe. So these division occurs 1 to 4 times during the day, yielding to 2 to 16 individuals. About 600 generations are produced in 1 year. The rate of multiplication depends upon the external condition of food, temperature, age of culture, that is, if we are culturing the paramecium in the laboratory, then how many days has been passed since we have started to culture the paramecium. So the age of the culture and population density, how many paramecium or paramecia are present in the culture flask. So the population density also determines the rate of multiplication. Also on the internal factor of the heredity and physiology. If all descendants of one individual were to survive and reproduce, the number of paramecia produced would soon equal to the volume of the earth. That means how fast they reproduce. The term clone is used to refer to all individuals that have been produced from one individual by fission. All the members of a clone are hereditary alike. So this is about the asexual reproduction in paramecium. पैरामीशियम में प्रजनन, पैरामीशियम में मुख्यतः अलैंगिक प्रजनन द्वारा जनन की क्रिया होती है। यह द्विविभाजन विधि द्वारा होती है। इस तरह का प्रजनन निरंतर होता है जब सिचुएशन या स्थिति अनुकूल होती है। इस प्रजनन की विधि के अलावा दूसरी प्रकार का प्रजनन जो कि सेक्सुअल या लैंगिक प्रजनन होता है, इसके द्वारा भी पैरामीशियम रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन लैंगिक प्रजनन एक प्रकार से केंद्रकी पुनर्गठनों द्वारा प्रजनन होता है। इस प्रकार के प्रजनन में न्यूक्लियस का रीऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है।
जिसमें मुख्यतः संयुग्मन होता है। संयुग्मन के अलावा और भी कई विधियों द्वारा लैंगिक जनन होता है, जैसे कि हेमीमिक्सिस, साइटोगैमी या कोशिका युग्मन, ऑटोगैमी या स्वक युग्मन, एंडोमिक्सिस यानी अंतः मिश्रण। तो ये कुछ और विभिन्नताएं हैं, वेरिएशंस हैं कॉन्जुगेशन में या संयुग्मन में। द्विविभाजन। पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विविभाजन अनुकूल परिस्थितियों में देखा जाता है। इसमें द्विविभाजन अनुप्रस्थ रूप से होता है, अतः इसे अनुप्रस्थ द्विविभाजन कहते हैं। इस क्रिया के दौरान पैरामीशियम भोजन करना बंद कर देता है तथा मुख खांच और मुख गुही संरचना विलुप्त हो जाती है। लघु केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो संतति केंद्रकों का निर्माण करता है, यानी डॉटर न्यूक्लियाई। विभाजन के समय केंद्रक कला विलुप्त नहीं होती है। दोनों संतति केंद्रक पैरामीशियम के विपरीत ध्रुव की तरफ चले जाते हैं। इसी बीच मैक्रोन्यूक्लियस यानी दीर्घ केंद्रक लंबाई में बढ़कर मध्य से संकुचित हो जाता है। वह इनमें अमाइटोटिक प्रकार का विभाजन होता है, जबकि लघु केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। तो दीर्घ केंद्रक लंबाई में बढ़कर मध्य से संकुचित हो जाता है। वह डंबल की आकृति बनाता हुआ असूत्री विभाजन एमाइटोटिक डिवीजन द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाता है। अब पैरामीशियम के दोनों सिरे की अधर सतह की तरफ मुख खांच का निर्माण होता है तथा कोशिका के मध्य में एक संकीर्ण खांच विकसित होने लगती है। यह तब तक गहरी होती रहती है जब तक संपूर्ण कोशिका द्रव्य पूरी तरह विभाजित नहीं हो जाता। इस प्रकार एक जनक पैरामीशियम से दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। ये दोनों पुत्री पैरामीशियम कहलाती हैं तथा आकार, आकृति व संरचना में एक दूसरे के समान होती हैं। जनक पैरामीशियम के अग्र भाग से बनने वाला पुत्री पैरामीशियम प्रोटर कहलाता है तथा पश्च भाग से बनने वाला पुत्री पैरामीशियम ओपिस्थे कहलाता है। पैरामीशियम कॉर्डेटम में द्विविखंडन की क्रिया से लगभग 30 मिनट के समय में पुत्री कोशिका का निर्माण होता है तथा एक दिन में यह क्रिया 2 से 4 बार तक दोहराई जाती है। द्विखंडन वैसे 30 मिनट के समय में पूरा होता है, परंतु पुत्री कोशिकाओं के पृथक होने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। एक पैरामीशियम द्वारा उत्पन्न संतानें संयुक्त रूप से एक क्लोन का निर्माण करते हैं जो आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। इस क्रिया की पुनरावृत्ति कई बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है।
जैसे भोजन की उपलब्धता, तापमान, पैरामीशियम की संख्या, उनका घनत्व, संवर्धन यानी कल्चर की आयु, शारीरिक कार्यकी एवं अन्य भीतरी कारक।